So hello everyone. Today we will be studying the digestion and absorption of carbohydrates. The transport will be studying in next class. आज हम सिर्फ digestion और absorption cover करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की. ये वाला जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म से भी पहले के प्रोसेसेस हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. So when these carbohydrates they are being digested, then they are being absorbed and taken away towards the cell for further generating energy. और हम already discuss कर चुके हैं इनको energy देनी है, and energy in biological system that will be always in the form of ATP. All right, so let's not waste time and precisely move on to the digestion of carbohydrates. Okay, so the principal site of carbohydrate digestion is mouth and small intestine. जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है. पॉलीसेकेराइड such as starch, glycogen and glucose. Disaccharide sucrose, maltose and lactose. Monosaccharide mainly glucose and fructose. And there is an important thing to note कि मोनोसेकेराइड को डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. मोनोसेकेराइड सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं. That is why whenever an athlete is टायर्ड, उसको सीधे हम ग्लूकोज डेक्सट्रोज वाटर में डिसॉल्व करके हम उसको दे देते हैं पीने के लिए. ओके, सो इसीलिए क्योंकि मोनोसेकेराइड को डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती. ऑलराइट, सो डाइजेशन इन माउथ. So digestion of carbohydrate, everybody knows that it begins in mouth, क्योंकि हमारे पास वहां पर एक एंजाइम होता है salivary amylase जिसको हम टायलिन कहते हैं. Okay, and what this tyalin is doing, it is breaking down the starch. It is doing hydrolysis of the starch during mastication. When we chew the food, the starch is being broken down into smaller units known as dextrins. These smaller units, they are known as dextrins. Okay, और कौन सा बॉन्ड टूटता है? अल्फा 1,4 बॉन्ड टूटता है. जब हमने स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने एक यूनिट पढ़ी थी, एक लीनियर चेन अमाइलोज एंड ब्रांच्ड चेन हमने पढ़ी थी अमाइलोपेक्टिन. तो इसका मतलब क्या है? जो ब्रांच्ड चेन है अल्फा 1,6 लिंकेज वो नहीं टूटती है, rather the linkage alpha 1,4 it is broken. Okay, so once they are digested, they are being broken down into this डेक्स्ट्रिन्स. जब ये डेक्स्ट्रिन्स में टूट जाते हैं, उसके बाद स्टमक में जाएंगे, ये है ना, माउथ से स्टमक में जाएंगे. स्टमक में आपको पता है वी हैव HCl in the stomach, and the HCl, what is this HCl? This HCl is acid, and what this acid is doing, it is terminating the action of salivary amylase. क्यों? क्योंकि ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये एक एंजाइम है, एंड वी नो दैट ऑल एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स, and we also know that proteins are denatured by acid. तो जो ये HCl है, ये HCl स्टमक में आपके सलाइवरी अमाइलेज को डिग्रेड कर देता है. ओके, देन becomes the intestine. Okay, so further digestion will take place in the intestine. So when the digestion is going on in intestine, वहां पर see all the salivary amylases, they are being inactivated by the action of HCl in the stomach. Now what happens? Further digestion will take place in intestine, but वहां पर अब जो enzymes आएंगे जैसे amylase, obviously माइलेज ही आएगा. वहां पर अब जो एंजाइम आएगा वो एंजाइम आपका आएगा पैंक्रियाज से. ओके, सो यहाँ पर जो डाइजेशन होगी ये होगी पैंक्रियाज में. एंड ऑल्सो देर आर सर्टेन इंटेस्टिनल एंजाइम सच एज सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, आइसोमाल्टेज, ये भी इसको डाइजेस्ट करते हैं.
सो लेट अस अंडरस्टैंड द ओवरव्यू। डाइट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, हम स्टार्च भी खाते हैं, चपाती खाते हैं, आलू खाते हैं, हम डाइसेकेराइड लेते हैं, है ना, हम मोनोसेकेराइड लेते हैं। तो सीधे सीधे आप देखो मोनोसेकेराइड तो सीधे आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना। मोनोसेकेराइड आपके जैसे गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सीधे आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब इसको हमने मोनोसेकेराइड से इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि पहले मोनोसेकेराइड अगर अक्सर हम नहीं लेते, बट शुगर वगैरह हम ले भी लेते हैं, चाय के साथ में ले लेते हैं, ठीक है। सो मोनोसेकेराइड आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देन इफ यू आर टेकिंग द डाइसेकेराइड्स इन डाइट, these disaccharides, they are not hydrolyzed in the mouth nor in the stomach. These disaccharides, they are being hydrolyzed in the small intestine. अब ये क्या करेंगे, maltose अगर होगा तो वो टूट जाएगा with the help of enzyme maltase, ये भी intestinal enzyme है, it will be broken down into glucose, sucrose will be broken down into fructose and lactose into galactose and glucose. Further, these monosaccharide will be absorbed via intestine into the bloodstream. अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, है ना। थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की बात करते हैं कि अगर हम पॉलीसेकेराइड खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, रिमेंबर ह्यूमन बींग्स के पास में अल्फा अमाइलेज ही होता है, वी डोंट हैव बीटा अमाइलेज। बीटा अमाइलेज इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बीटा अमाइलेज इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो अल्फा अमाइलेज इसको डाइजेस्ट कर देता है डेक्स्ट्रिन्स में, देन यू नो स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होती, देन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक अमाइलेज अगेन मोर्चा संभालता है, इट the dextrins, they are broken down into maltose, and further the maltose is broken down into the glucose and absorbed into the bloodstream. So when we talk about the pancreatic amylase, the function of pancreatic amylase is to degrade dextrin further into the mixture of maltose, isomaltose and limit dextrins. So what are limit dextrins? They are smaller oligosaccharide that contains 3 to 5 glucose subunits. Okay, intestine जो जितने भी intestinal enzymes हैं ये भी ब्रेक करती है डाइसेकेराइड को, माल्टोज को ब्रेक करेंगी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को, ग्लूकोज में क्यों, इनटू देयर रिस्पेक्टिव सब यूनिट्स। आइसोमाल्टोज के लिए एंजाइम आएगा आइसोमाल्टेज बिकॉज एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंड इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू glucose subunits. Further, sucrose will be broken down into glucose and fructose by sucrase, and lactose will be broken down into glucose and galactose by lactase. Also, the limit dextrins are broken down into glucose and maltose by dextrinase. So, अब जो end product बने ना इसके जितने भी end product हैं such as glucose, such as galactose, okay, maltose, फ्रक्टोज, ये जितने भी एंड प्रोडक्ट हैं ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन से आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली दे गेट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द intestine. So that's all for today. We will be studying the transport of carbohydrates in the next classes, and then further we will be starting with the metabolism portion. So thank you so much. Stay tuned in for next concepts.